Assalamu alaikum, bros. Welcome to the Chaar Payi podcast. Walaikum assalam. This is the second episode. do you think they know हम लोग कराची से? नहीं हम लोग we just did an outfit change second episode के लिए. Yeah, guys, like this is the same day. Nothing changed. And it's totally not like we had camera and mic problems in the first episode. I think it's a highlight that Ammar's mic completely disconnected in the middle while he was trying to sing Safarnama. And I think that was God's way of protecting us from getting copyright struck. I think my singing voice would have never landed us that. पता नहीं. You should try singing a whole song. Suffer. I was saying अभी start हुआ second episode है. Anyways, speaking of like changing clothes, a funny thing happened to me in university. There's this new student who walked in, right? And क्या बोलते हैं, he was sitting right next to me, and you know my default shirt, the polo, it's like a black floral and white polo. floral, and because obviously मैं floral ही पहनता हूँ. My God, दोनों एपिसोड में फ्लोरल पहना हूँ. And I think तुम उसमें black पहने हो, white पहने हो. You just switch from these tones. So yeah, we're like characters from a cartoon. Definitely. You know how like एक ही type के लेकिन they just switch up a bit. They like when cartoons open up their closet and it's the same. Dexter का coat लगा Yeah. continuously. खैर तो क्या बोलते हैं, मैं जाके बैठा क्लास में, and then उसके बाद one person goes like, "Wait, this new kid next to you, he's wearing the same clothes as you, right?" And I'm like, okay. And I see, and he's wearing a black and white shirt, floral है, सही है. And he's wearing jeans. I was wearing jeans. He's wearing like black shoes. I was wearing black shoes. He was wearing like the same like bangle. I was wearing bangle wool. No, it's like a bracelet. Imagine I wear a bangle, or I'm showing you from Tekken. But क्या बोलते हैं? He was wearing almost everything. And then guess what? I look at him. I notice he has a mustache too. Oh no! What are the chances of that? It's the rarest. Oh, by the way, welcome to the Chaar Payi podcast. I'm Shehzain. I'm Ammar. Yeah, and we are brothers for life. Something. It's disgusting. क्या बोलते हैं? Yeah, this guy was like wearing exactly everything I was wearing, right? And I was like, shit, I think, okay, so like around 2 साल पहले, सही है, I was like, you know what, I'm becoming a floral guy. Yeah, yeah, and then I was like, सही है, I got like 7 florals, and that was my whole closet and my whole like character, right? For the next 2 years, Yeah. अभी तक. So I was like, okay, सही है, I'll be this guy now, right? And then I realized that in just that day, I think 5 people separately came up to me and went like, dude, that guy's wearing the same shirt as you. और मैंने बोला कि भाई, like, this is like enough time for a character change. And studying in an art university, you have to keep your individuality, यार. Yeah, definitely. वरना तो who are you? What do you mean definitely? You do. मैं medical uni में. Yeah, you do. आज मैं अपना लैब कोट सर पे बांध के आया हूँ. You know, I used to do that जब बारिश हो रही थी तो like मैं यूनी के अंदर बिल्कुल भी लैब कोट नहीं पहनता हूँ, राइट? तो I do keep it in my bag, लेकिन I only use Keep it. talking, I'm gonna check अगर record हो रहा है. So I basically use it ताकि जब बारिश होती है तो पानी आता है. तो मैं बाइक के पर जाता हूँ, तो जितनी कुत्तों वाली बारिश होती है और ऊपर से नीचे जो है वो गटर बह रहे होते हैं, तो बेसिकली आप नीचे से भी नहा रहे होते हैं और ऊपर से भी नहा रहे होते हैं. तो फॉर दी ऊपर वाली सोल्यूशन व्हाट आई डू इज के आई जस्ट टेक माई लैब कोट आउट एंड आई पुट इट ओवर माई हेड, एंड उससे मैं अपना पूरा बैग, अपने आप को और बाइक वाले को भी आगे पर्दा दे देता हूँ. Nice. Do you think when you, as soon as you put that on, पीछे से अरबी म्यूजिक बजना शुरू हो जाते हैं? बॉस का म्यूजिक
right? You see a woman with like really majestic eyes. वो छन वाले वो लगे अफगानी कारपेट वाले उससे गुजर दो तुम. काबुली पुलाव लेकर काबुली पुलाव. Anyways, what was I saying? So I've decided that now I will switch to lumberjack, trucker, and fisherman cosplay. Cosplay, nahi, that's my new character now. सही है, क्योंकि long time coming I will be country guy now. And as first indication of that, मैं बुध बाजार से जाके अपनी पहली hat लेके आ गया हूँ. Why is it his fisherman era now? Or are you a baseball dad? Kimadi Port, you can find me there. सही है. What was that? Are you a Mario character? Deep diving, I don't know. Yeah, you think I did this? You're not going into the ship, you're just deep diving and catching fish. Yeah, just go you at first. Okay. This is a fun time. I was thinking, okay, what's your next fashion endeavor that you'd like to go on? Oh, considering it's medical uni, so I've always just been wearing either oversized shirts and pajamas या फिर just casual t-shirts, like ACDC की oversized shirt पहन कर चला गया, कभी जो है वो बिल्कुल भंगियों वाले हुलिये में चला गया. तो और दो पट्टी चप्पल definitely दो टप्पी चप्पल. So now that I'm getting closer to like final year, so I need to start building like I need to start dressing a bit better, right? Though I'm moving more towards like wearing chinos and dress shirts, stuff like that. You want to be the guy who like तुम विरल्स कर रहे होगे. Yeah, I need to go into the conventional style. Oh my god, Dr. Saeed. Someone walks in, Dr. Saeed. Oh, look at the polo he's wearing. ये तो मेरा अच्छा इलाज definitely करेगा. Government hospital में तुम आते हो, someone's like, oh my god, look at the polo he's wearing. भाई AC/DC की शर्ट अच्छी. Oh shit, if I saw my doctor wearing AC/DC. Imagine. Cut my life into pieces. Not anything. Wait. That was an AC/DC. That was an AC/DC. Yeah. Also copyright strike हो जाएगी हम. खैर, क्या बोलते हैं? I think you know what's the saddest thing that's happening in the country right now? What? The import-export thing, which is why our fashion game has stopped. So if ladies, you are like you feel like you can't be raised by us, ये हमारा मसला नहीं है. Blame the country. Yep, definitely. Like the place we shop from, वहाँ पर like जो भी चीजें आती हैं वो अब नहीं आ रही है because of the restrictions on the import and the export. पूरे containers जो shout out Saddar, shout out Rec Center. My boy Rec Center. First of all, we are Saddar masters for life. सही है. No one can. We can just smell our way to a shop. मैं सूंघ के दुकान निकालता हूँ. सही है. Yep. Do you want to tell the jeans वाली story? Oh. Satisfy हो गए थे जब. Oh, I think we should do the Teddy Uncle wali, the guy who was rubbed. Oh shit! Okay, okay. That's a fun one. This one time I walked in, and was I think my second the first time with Ammar. Like we were like going into Rec Center, right? Yeah. And like पहले he'd come, like, and I was fairly. I mean, अभी तक बर्गर ही हूँ मैं. लेकिन खैर, anyways, तो I walked in and क्या बोलते हैं, we're like हम लोग देख रहे हैं. I'm like, वाह यार, cool, high beast psychedelic shirt यहाँ पे, right? ये तो thrift store. At that time, Shehzain was definitely in his high beast era. नहीं, I was entering my floral. नहीं. I still remember you just sitting with like this chat guy and you were like, Adidas के पजामे. तुम्हें bro पता नहीं high beast क्या होता है, right? Louis Vuitton मेरे daddy.
Again, this is like the party thing. So, yeah, this is an experience that has happened to you only. Khair. I walked in, we walked into this shop and we were like, wow, cool, like, kitni cool shirts dikh rahi hai, right? And Ammar's completely looking at his own, like, pair. And I find like a cool shirt and I look up at the guy and I'm like, oh, like, I'm about to ask him, मैं उठाता हूँ, बोलता हूँ, भाई ये, and then I look at the guy and he has like his full belly out and he's just doing this. Yep, just rubbing his belly. And so majestically, like there's no worry at all. मैंने आज तक इतना आराम नहीं देखा है आदमी में जितना होता. उसने शर्ट सिर्फ यहाँ तक एब्डोमेन तक नहीं पुल करी हुई थी, उसने पूरी ऊपर तक पुल करी हुई थी. I was like rubbing his chest, his tummy, like everything, and like he had a chest full of hair. ठीक है, full अनिल कपूर moment था. हाँ, तो फुल अनिल कपूर मोमेंट था. He's just going on rubbing and like हम नोटिस भी करते हैं, we're looking at him directly कि क्या कर रहा है ये बंदा. Okay. So there's two things, right? Number one, I look up at the guy, I notice what he's doing, right? And I'm like, सही है, this is a thing that is occurring right now. And मैं अब like ये मैं सोच रहा हूँ ये किसी काफका की दुनिया में फंस गया हूँ मैं जब ये नोटिस कर रहा हूँ. लेकिन आई एम लाइक ओके सही है, आई कम टू टर्म्स विद इट. आई हैव माय इंटरनल स्ट्रगल. मैंने एक्सेप्ट कर लिया ये हो रहा है दुनिया में मेरे सामने, राइट? एंड आई लुक डाउन एंड आई लुक एंड देयर वाज अ मिरर, राइट? And Ammar is checking his own shirt and he finds a cool shirt and I'm just looking in the mirror and Ammar turns around and this is Ammar's reaction. Right? But I'm dying, right? There was a guy half naked in front of us, full Anil Kapoor. What do I do? I keep looking at him. हाँ, uncle बड़ी tight tone है आपकी. You go like कितने महीने हो गए? So yeah, that's the polite way. So yeah, and then you like give it gentle rub. So yeah, you ask if he's like आज खाने में क्या खाया है? अंकल दूध पिया था आज. आज मोला चाहिए, सब सेट है, कैसे हो, राइट? खैर, so that happens and then उसके बाद like my god man, like since then we knew के rec center is our place. Yeah, definitely. ये हमारी जगह है, हमारा इलाका है भाई. And then like my god, after that so many people come to us and go like, bro, please sir हमें रास्ता बता दो सदर में. And we're like भाई क्या हो गया है, देख रहे हो हमें सूंघ के निकालने कौन सी चीज चाहिए तुम्हें. बट पाकिस्तान प्लीज यार अपना इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर कर लो please यार. I really need some new fashion, dude. Do you know? This is the most privileged part. Please fix the economy. ताकि हम अपना fashion sense change कर सकें. Care. But नहीं यार, this is a genuine thing. हाँ, just want to revamp our closet, man. मैं ड्रिपलेस हो गया हूँ. मैं ड्रिपलेस हो गया हूँ. मेरी ड्रिप खत्म हो गई है जनाब. बर्गर का है. नहीं भाई, जनाब बोला है मैंने आगे. आली जा. सब बर्गर यही बोलते हैं. और you know जो बॉलीवुड मूवीज के अंदर जो सलमान होते हैं, अदाब जनाब. Imagine this, सही है, मैं स्कूल में बैठा हूँ, सही है, and people are like, नहीं शहज़ैन तू बर्गर है भाई, क्योंकि like coming from the family I do and then going to Gulshan schools most of my life, everyone's like भाई तू बिरयानी नहीं खाता हमारी तरह, तू बर्गर में हाथ डाल के रोटी नहीं खाएगा कभी. तुझे पता है कि चावल कितना मोटा होना चाहिए या कितना बारीक, नहीं ना तू बर्गर है. ये बासमती है या शासमती. मैं सिर्फ culinary school गया हूँ आज तक. So like I've always known कि मैं बर्गर हूँ and it's always been a very prevalent part of my life to escape from that. So imagine कि एक दिन कोई बंदा है बोले शहज़ैन तू बर्गर है, and then अगले दिन you see me come in और मैं शलवार कमीज पहन रहा हूँ, सर पे टोपी सही है, सुरमा लगा हुआ है, यहाँ पे लगी हुई है. like I have दाढ़ी लेकिन कोई मूछ नहीं है. and then क्या बोलते हैं, एक तावीज है यहाँ पे, सही है. and then I'm like आदाब जनाब, कैसे हो आप? आली जाओ मोहतरम, हम लोग अलीगढ़ से आते हैं. अलीगढ़ से हम सर सैयद के डिसेंडेंट हैं. I don't think it's a descendant, लेकिन खैर. What do you mean, Sir Sayyid didn't have descendants?
नहीं, like nobody would say the word descendants. हाँ क्या व्हाट्स दैट? पुश्ते, नस्ल. सातवीं पुश्त के बेटे हो. मैं नस्ल हूँ. You know, पुश्ते हैं, like everybody has that one story कि हमारी 7 पुश्ते protect हो रही हैं by like एक ही जिन की community है who's protecting like 7 पुश्ते. Dude, हाँ वैसे बहुत सारी होती हैं. I remember this one story जिसमें I think I've told you कि like someone, no I'm not gonna get into jinn stories a lot, लेकिन I'll just say this one person who बेसिकली सेट के उसके नाना या दादा को एक जिन आके सेट कहना मेरे पता नहीं किसी की शादी है, मेरे बेटी की शादी है, आप यहाँ पे ना दे के रख के चले जाए एंड जस्ट लीव दैट प्लेस फॉर लाइक 5 minutes. एंड देन वो लोग जाते हैं एंड देन दे लाइक लीव वहाँ पे, लाइक दे गॉट अ नोट राइट, एंड दे लीव 2-3 दे गए बिरयानी की एंड देन दे क्लोज दैट प्लेस अप जहाँ पे दे सेट के यहाँ पे शादी वादी होगी और व्हाटएवर. एंड देन कुछ 5 मिनट गुजरे थे एंड देन दे ओपन द डोर अगेन. उन लोगों को बहुत ज़्यादा शोर आया, दे ओपन द डोर अगेन एंड देन लाइक देर खाली थी एंड दे हैड लाइक आई गेस आइदर प्रोटेक्शन या तो आई रिमेंबर देयर बीइंग के लाइक हम तुम्हें सोना देंगे इतना. सही है. एंड आई एम लाइक सोना मिला था उन्हें? आई बिलीव सो. लाइक इट दे हैड दैट्स गुड ट्रेड. बिरयानी की जगह सोना राइट. बट हियर्स माय क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट they were बहुत hungry? Do you think they're just really hungry people? उनकी इकोनॉमी के अंदर गोल्ड चलता ही नहीं होगा. They just had so much access of it. They were like, हाँ ये दे देते हैं बिरयानी तो हम लोग में किसी को बनानी नहीं आती. But क्या बोलते? I had a really racist joke there, man. Wow. They were just bachelors. Do you think they were just bachelor? Possible. They just ate noodles every day. So the scientific person who just watched Oppenheimer and all of the Nolan films will tell you, नहीं भाई चोर थे, सिर्फ चोर थे, उनको बिरयानी देऊं खा के चले गए. Shout out my boy Anosh. What? Anosh चोर है? I think we should talk about the जब बाइक के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो the fundamentals of basically defending yourself on it. Bike या self defense? Yeah. I think this is a Karachi self defense. That's much better. And which I'm an expert on. So yeah, yeah, I'm an expert. I play enough games to know what I'm talking about. Okay, Mikiri counter मारता रहता है ये हमेशा कराची में घूमते हुए. Okay, so yeah. Do you think you're better? Okay, so yeah, as a Nazimabadi. Yeah, so basically like I was telling you guys, जब बारिश होती है तो आप ऊपर से लैप कोट से तो अपने आप को कवर कर लेते हैं. What do you do about your nichla region, right? So what you do is basically you imagine you're having sex with someone and you go like right? You just go into full machinery. By the way, guys, side में हम लोग का एक और business है called feet pics by Ammar. सही है. And you just got a good. Yeah, so I'll attach my paper like right here. And this is a doctor in the future. यार ये मुल्क गया भाई, खाक है भाई ये मुल्क. सही है. हाँ, so on bike, yeah, like when we're traveling usually, so we're listening to songs, right? Yeah. So we usually have like our mobile out and open. Yeah, फिर on some days we just like put on a playlist, so we just put it in our bags. But since we have our mobile in the open and it increases the chances of just us getting robbed. So like what do you do to try to protect it? Like I usually just use my t-shirt and I just wrap my mobile around in it, like जिस तरीके से एहराम जैसे बांधते हैं. नहीं like do you think more people would know कि एहराम कैसे बांधते हैं? नहीं, I think more people would know कि like औरतें BC के पैसे अपने दुपट्टे में बांधती थी जिस तरीके से. I have no idea what you're talking about. इसलिए मैं बर्गर हूँ. Right. BC. Anyways, क्या बोलते हैं? I was saying कि हाँ, so I have a thing in the bike here. Oh, speaking of bike here, do you remember the thing that happened to you, socks ka? Oh, right. So there is one thing I was not able to protect myself against, and it was this one time I was going. I think I was coming over to your house. Yeah. So I wore these socks. Like I usually wear like very funky socks.
तो दिस वन टाइम आई वाज वेयरिंग दीज वंस जिसमें मोनालिसा बनी हुई थी. शाउट आउट फैशन गेम नेक्स्ट लेवल पाकिस्तान गेट योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अप. शाउट आउट. एनीवेज सो उसमें मोनालिसा बनी हुई थी राइट. तो मैं लाइक आई हैड इट ऑन डिस्प्ले. जब बाइक पे बैठते हैं तो आपका जो I had it on display. बेसिकली जब आप बाइक पे बैठते हैं तो आपकी शलवार हो, आपका पजामा हो या जो भी हो, वो 10 मील ऊपर चढ़ जाता है. आपके पांचे तक आ जाए, लाइक आपके पांचे जो है वो आपके घुटने तक आ जाए, ये होता है. खैर तो जब हम जा रहे थे तो देयर वाज दिस वन अंकल जो कि बाइक के ऊपर अपना कोई बहुत ज़्यादा सामान लेकर जा रहे थे राइट. एंड लाइक बाइक पे फुल हैवी प्रेशर पड़ा हुआ था उस सामान का. ठीक है. द अंकल ऑन द लेफ्ट ही जस्ट लुक्स ओवर टू मी. ही गोज लाइक बेटा ये क्या बने हुए तुम? अस्तगफिरुल्लाह. पाँव में Wait. On the Mona Lisa. Yeah. The Mona Lisa, like on my feet, right? Like I don't know how I'm giving so much respect to her by having her on my feet. मगर like yeah, go ahead. So he goes like क्या हो गया आजकल के नौजवानों को, ये पाँव के ऊपर क्या पहने हुए हैं? You're having this conversation with the guy whilst नहीं मैं बस यूं करके देखता हूँ अंकल की तरह, बोलता हूँ हाँ अच्छा, एक कान से निकालता हूँ क्या बोल रहे हैं, अच्छा मैं देखते रहता हूँ. 2 सेकंड के बाद अंकल जो है वो बाइक के हैंडल छोड़ते हैं, हवा में हाथ करते हैं, नीचे सामान रखा है वो, और मेरे लिए दुआ मांगना शुरू हो जाते हैं हिदायत की. भाई यार ये जन्नत जाओगे ना इस अंकल के वजह से जाओगे तुम. साले मोनालिसा पहन ले तो अपने पैर पे. हिदायत मिल गई तुम्हें. स्पीकिंग ऑफ हिदायत, the people that come over to your house to give hidayat, how do you? भाई ऐसा ओके सही है. देखो ये है ना सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स हैं. सही है. मेरे पास विच आई हैव अमेस्ड ओवर माय लाइक मेनी इयर्स ओवर लिविंग इन कराची. सही है. तो ये है ना इट्स यू ऑलमोस्ट नीड टू अप्रोच इट ऐसे कि बिल्कुल गेम है. सही है. ये गेम ही है ना. गेम ही है. खैर तो इमेजिन दिस. सही है. आप घंटी बजती है आपके घर की. सही है. आप जाते हैं एंड लाइक यूजुअली इट्स अ सरप्राइज अटैक. सही है. तो थ्रू आउट नेचर ये सब शेर बैठा हुआ होता है पीछे और एक हिरन उसके सामने. एग्जैक्टली राइट. तो थ्रू आउट नेचर देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हंटर्स. जैसे कि एक चीटा जो होता है वो बर्स्ट हंटर होता है. सही है. वो बहुत तेज भागता है लेकिन वो भाग ही कुछ सेकंड के ही सकता है क्योंकि उसका दिल इतना. इसी तरीके से है ना तबलीगी जमात वाले जो होते हैं वो सरप्राइज अटैक पे. शाउट आउट माय बॉय तबलीगी जमात वाले, डू नॉट कैंसिल अस एट ऑल. यस प्लीज. तो दे अटैक इन अ वे कि सरप्राइज अटैक होता है ना उनका. तो आपकी दरवाजे की घंटी बजाते हैं राइट. and then you open up and then basically you have a very small time frame. सही है. जिसके अंदर आप उस सिचुएशन से escape कर सकते हैं. सही है. अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको है ना बेसिकली वो आपको पैरालिसिस स्पेल में डाल देते हैं. सही है. there is this technique I've seen work on like so many people. सही है. like look at this. सही है. okay ding dong दरवाजा खोलो. That was a weird sound. लेकिन अस्सलाम वालेकुम बेटा. Stuck. Death. सही है. अब अगले घंटे तक मेरे पास है ये बंदा. सही है. ये जब हुआ है ना. सही है. वो पकड़े रहेंगे. हाँ. Other than that आपके पास एक और टेक्निक है right? Which but it like gives you have to sacrifice things. सही है. Equivalent exchange काम करता है. सही है. You have to do this क्या ना आपने. लेकिन यू हैव टू हैव सिचुएशनल अवेयरनेस. ये एक की फैक्टर है कराची में. इफ यू जेन्युइनली इफ यू डोंट हैव दिस यू आर डेड. सही है. कराची में रहने के लिए यू ऑलवेज हैव टू बी अवेयर ऑन ऑल योर फिफ्थ सेंसेस. 100%. सही है. सिक्स्थ डॉक्टर इसको 5 पता है. तुम्हारे 6th कौन सा है? हाँ तुम्हारे 6th कौन सा है? गेंजुट्सु. क्या बोलते हैं. एनीवेज तो बेसिकली अगर आप सेंस कर ले तो कि आपके ऊपर सरप्राइज अटैक होने वाला है. सही है. सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज के एक तो आप कंफर्म करें अगर आपके दरवाजे में थोड़ा सा क्रैक है या तो एक फिश आए जो होता है ना आप देख लो. ओ शिट ये तो तबलीगी जमात वाले राइट. तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज दरवाजा खोलो और अपने सिबलिंग को बाहर फेंक दो. छोटे भाई को. सही है. जस्ट सैक्रिफाइस हिम. या राइट. एंड देन बट टू द गॉड्स.
क्या पता उसको हिदायत मिल जाए. जो बात है. सही है. Your house is the altar. There are the gods and you just sacrifice. आप है ना, आप है ना अच्छा काम कर रहे हो. सही है. आप किसी को हिदायत दे ऐसे कि लाइक जन्नत पहुंचेगा वो. एग्जैक्टली. जन्नत 1, जन्नत 2, इमरान हाशमी. favorite films, right? He's gonna go watch either of them. जन्नत 2 में वो मर जाता है. हाँ, मेरा भाई. बट दिस इज हाउ बेसिकली आपको है ना, इनका मेन अटैक होता है ये पैरालिसिस. सही है. आप इससे बच जाएं तो फिर आप है ना मेन काफी सारी चीजों से बच सकते हैं. या तो लाइक आप क्या बोलते हैं, लेकिन अदर देन दैट ये ना प्राणी बहुत they're really dangerous. You need to stay really like aware of them. And just like that, बस के जो कंडक्टर है ना, क्योंकि आई एम टेलिंग यू डूड, आई हैव एक्सपीरियंस ऑल ओवर कराची. आई नो कौन है ना लाइक सबसे कहाँ पे सबसे बड़े कीड़े जमा हैं. हाँ. देखो आई एम बर्गर, आई कैंट से दिस शिट, इट विल बी क्लासिस्ट. सही है. लेकिन What do you mean I can? हाँ तुम थोड़े बन कबाब टाइप हो. बट इवेंचुअली आई विल से दिस. सही है. आई थिंक के जो आपको है ना, ओके, ऑल ऑफ दीज आर बेस्ड अपॉन सिचुएशंस. सही है. एंड अगेन सिचुएशनल अवेयरनेस इज की. सही है. कराची में एंड वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस व्हिच इज वेरी रेयर, बट यू कैन never say this chance is completely zero. सही है. The probability is always there. सही है. 0.01 होगी लेकिन it's always there. Just a friend of mine recently, Taj. Do you know what happened to him? Yeah, so there was a momentary डकार ब्रेक. नहीं, इसको पैरालिसिस हो रहा है. लेफ्ट जमात वाला बराबर में बैठा है. खैर, so my friend Yasir, he wakes up to my friend Taj's call at 8:30 in the morning, right? Taj goes like, Yasir, basically Yasir and Taj are co-workers, like, right? So Taj is like, I'm coming over, let's go together office. ठीक है. तो यासिर जो है वो 8:30 पे उसको वैसे ही नहीं उठना होता है. ही वेक्स अप लेटर बट इज़ लाइक ओके आ जाओ. ही गेट्स एंग्री वैसे ही. खैर ही इज़ लाइक 10 मिनट में मैं आ जाऊँगा. तो यासिर गेट्स रेडी एंड ही इज़ डाउन टू वेटिंग फॉर ताज लाइक बाई 8:40. ठीक है. And then Yasir is just waiting and like time goes by, like 10 minutes go by, 20 minutes go by, 30 minutes go by, right? It's like 9 now. And 10 minute के बाद again Yasir calls Taj का छोटा भाई and he goes like यार ताज कहाँ है. तो he's like ताज तो अभी निकला है 10 मिनट पहले. ना, द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट ताज का यंगर ब्रदर इज के ही ऑलवेज लेट्स हिम आउट, राइट? जस्ट ऑलवेज. ठीक है. बिकॉज ताज है ना तबलीगी जमात के ऊपर फेंक चुका है वो एक दफा. ही इज गेटिंग बैक एट हिम. So by it was 9:10 by that point. उसके बाद यासिर waits for like another 20 minutes. 9:30 पर ताज आता है. ताज को वो देखता है. यासिर उसको 2-4 गालियाँ देता है एंड ताज बस उसकी तरफ यूं करके देखता है एंड वो अपनी बाइक पार्क करता है. देन they go on to sit in Yasir's car ताकि they can go to their office. Like a Fincher film. Taj is going to be killing Yasir by the end of it. Like detective. So Taj goes like Yasir goes like, hey Taj, where the fuck were you, right? And like keeps on abusing him, like just goes on him. सही है. And like बोले जा रहे हैं. ताज बस उसकी तरफ एक दफा देखता है. के बच्चे. I left my home at 8:30 dot. ठीक है. I was like more than halfway to your house. मैं जा रहा होता हूँ बस के बराबर से. बस का कंडक्टर थोड़ा सा अपना मुंह बाहर निकालता है एंड इतनी बड़ी पान की पीक मारता है कि मेरी पूरी के पूरे कपड़े रंग देता है कंप्लीटली. ठीक है. And then I had to go back. I had to change my clothes. I had to take a shower.
and then I had to leave by 9. नहीं यार, see the thing is कि अगर आपको like this is something that can happen. कराची में कभी हर चीज हो सकती है. Murphy's law, सही है. If anything can go wrong, it will go wrong, सही है. And तो if you look at this, सही है, हमारे जो दोस्त है ताज, he definitely wasn't operating the same throughout the day क्योंकि he took +5 poison damage, सही है. Again, this is a game, भाई. तुम समझ नहीं रहे हो. तो the only way you counter it is like by having a beaker अपने जो exactly. जेब होती है ना उसकी बाइक की, उसके अंदर you always carry a beaker, right? सही है. Yeah, so जैसे ही आपको फील होता है ना, like your sixth sense, you just take out that beaker and immediately आप अपने मुंह पे रख दो बीकर, सही है, वो पान की पीक मारता है, आप कलेक्ट राइट एंड यूर लाइक सही है. what are these fucking sound effects? ऐसा ही होता है भाई. तुम घूमे नहीं हो कराची मेरी तरह, सही है. तो yeah right as it just flies back, सही है, and hits the bus conductor, सही है. बट द थिंग इज कि नाउ ये ना मॉब बॉस की तरह होता है, सही है. तो अगर बस के सारे लोग आपके ऊपर चढ़े हैं या तो बस वाला बंदा इट्स लाइक अ टैंक काइंड ऑफ, वो अगर आपकी तरफ आना शुरू हो जाए तो फिर यू हैव टू काइंड ऑफ लाइक आपको इतनी लाइक अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं निकल सकूं, सही है. I think the greatest way to avoid this is like this one stealth mission I thought of in which you know how आप रोड के ऊपर जा रहे होगे, you're just casually driving and एक बस वाला आपके सामने होगा, बीच में रुक जाता है, so वो थोड़ा सा साइड में लेगा, आप का रास्ता आधा ब्लॉक कर देगा और बीच में खड़ा हो जाएगा एंड पानी पी, उस बंदे को बुलाएगा और बोलेगा पानी दो मुझे, ठीक है. सो व्हाट आई थॉट ऑफ इसके द परफेक्ट थिंग टू डू इसके हर स्टेशन के ऊपर जो है ना जो ऑरेंज कंटेनर होते हैं जो पानी वाले होते हैं, जो जग है उसके अंदर आप चूहे मारने वाली दवा डालो ढेर सारी, ठीक है. एंड जब भी आए बस वाला, 7C वाला आया, W11 वाला आया, आपने उसको बस ग्लास दे दिया पानी का, आराम से भाई, साइलेंट बट डेडली, सही है. हाँ, सो आई आल्सो व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट बिफोर दिस, एक बस वाले murdering them. Jeez, dude, that reminds me, there's this amazing thing that happened. एक क्या बोलते हैं, मैं रिक्शे में जा रहा था, I was going to uni. And क्या था कि damn, this is the world, like this is us like telling you how to defend against the working class. This is how telling you how to beat the working class. This is the most elitist shit you'll be hearing. Worst podcast. Yeah, I think you should be proud of that. Welcome to the #1 class divide podcast on Pakistan. क्या बोलते हैं, हाँ. सो एक दफ़ा मैं रिक्शे में जा रहा था एंड हेडफोन्स लगाया हूँ, आई एम चिल्ड आउट, राइट. एंड क्या बोलते हैं, एक हम लोग जौहर में पता नहीं किसी बहुत ही उस ख़तरनाक उससे जा रहे थे, रोड से जा रहे थे, और क्या बोलते हैं, एक आंटी या तो 2-3 अंकल चलते हुए जा रहे थे एंड दे लाइक ये वाला जो डॉज होता है ना, आप रिक्शा डॉज मार दो, आप बिल्कुल जाते हो एंड देन अपना रेल्म शिफ्ट एक्टिवेट करते हो, आप यू करके डॉज करते हो, राइट. गियर 5th, बिल्कुल बिल्कुल आपके पीछे से रिक्शा निकलती है और ऐसे करके निकली और क्या बोलते हैं, माय रिक्शा वाला वही टर्न्स अराउंड गोज लाइक, भाई तुम टैक्स नहीं देते हो, ऊपर देखो पेडेस्ट्रियन ब्रिज, ऊपर देखो पेडेस्ट्रियन ब्रिज, तुम टैक्स नहीं देते. एंड आई एम लाइक शिट, ये तो मैंने नहीं सोचा. दैट रिक्शा गाय लेजेंड है भाई, वो आप उसको बीट नहीं कर सकते. एंड फाइनली क्या बोलते हैं, इफ you ever encounter a mobile chore, which is the worst case scenario, this is the legendary final boss of Karachi, you can't do anything. Yeah, just give him everything. I've lost everything to him. Sorry. Don't apologize to me, apologize to them. I'm sorry. I feel like recently मैं शारिफ फैजल में I sat on this like shawarma खाने की एक अच्छी जगह थी, and I sat there and I was sitting there with a bunch of my friends, और वहाँ पे I saw like a bunch of like I saw a lot of girls walking there, and it was like relatively boys like ढाबा type area थोड़ा लग रहा था मुझे, and I was like, oh, this is cool. Like girls are roaming the streets now. I'm like,
सही है, better, good, safer Karachi. And then I was like, but obviously there with a lot of dudes as well. I was like, I looked to my friend and I was like, oh, like this is cool. Like, क्या बोलते हैं? I think like people are on dates or stuff यहाँ पे, right? I was like, nice that girls can roam around in places like these now. And he was like, oh, नहीं, they're not on dates. ये IBEX के employees हैं. These are just Not IBEX. ये IBEX के बस लोग हैं, यहाँ पे ऑफिस था उसके करीब, तो they were just like, वो बस IBEX वाले लोग थे and वो बस घूम रहे थे, right? I like how you started to speak of IBEX just after I said systemic oppression. Yeah, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे. IBEX, you are probably a good company, सही है, sponsor us. What do I think? हाँ. So what happens is that I'm like, okay, this is weird. I've never heard of IBEX before, but apparently call center की job है, right? And as someone who works in like content writing and stuff, I'm like, oh, I can get with like these young people getting jobs, whole scene, right? So I was like, okay, whatever. And a friend of mine was like, oh, have you not seen their marketing and stuff? So he like Instagram pe he searches IBEX, right? And first shows up the goat. Right. Yeah. Second shows up IBEX ka like official page, and if you open that, it's all like young people going like, "Are they at IBEX?" Right? And it's like, I was like, oh no, it's like some IVS flashback or some shit. Oh, no. And then I'm like looking, and it's these guys, and they're like, oh, क्या बोलते हैं? They're going through like, oh, let's vlog at like IBEX or something, right? And वो पूरा बता रहे हैं, and they're like, इतनी positive work environment है, and we're all like Gen Z, right? And we're like, okay, funny. sure, right? It's corny as fuck. I'm like, sure, Gen Z in the workforce now, good, अच्छी बात है. But क्या बोलते हैं? And then there was a third page, right? Third page said IBEX confessions. Fuck. Think if you have a workplace जहाँ पे there's a confessions like page. It's not even just about workplace. Like even the college ones, the school ones, they were the absolute worst things. But I'm saying, think about कितना young crowd होगा आपकी workforce में कि that's true. you have a confession page. तो like अगर like किसी like वो राइमा जो 4th फ्लोर पे काम करती है, तुमने देखा था वो कल दुपट्टा इतना अच्छा पहन के आई थी. Imagine like some like कोई पुराना अकाउंटेंसी फर्म है, वहाँ पे like confessions पेज हो उनका, असगर भाई ने आज चाय 3 लेके आ गए थे, लगता है कि आज थोड़ा उनका ऑल नाइटर करके आए हैं, राइट? और इट्स लाइक, यार इसने मेरी पे वापस से रोक दी, मुझे आज भी सैलरी नहीं दी, राइट? क्या महीने से रोकी भी है, राइट? इट्स लाइक, यार this reminds me of Osman ka, you remember Osman's dad, the Jadu thing? Oh no. I have to say it now. I have to say this. Okay, so we have a friend, right? And his dad said that this is a real thing that happened to his colleague. Oh shit. And okay. we absolutely do not know why the colleague told Usman's dad about this. Like, why would you ever? Or like how this like came into his mind. Again, Karachi mein you can never expect these things, right? If there are any Islamabadis or Lahoris watching this, or anyone else from any other city, you know कि यहाँ पे you can't mess with us. That's this is a Karachi shout out podcast. my boy Karachi. Yeah, bhai, Karachi chal. Anyways, what was I saying? So, geez, I don't want to like exclude cities. No, you guys can like. I love Islamabad. Mera bhai Islamabad mein. It's like such a great. It's all good. Oh, so, I have a bad story about Islamabad. We can talk about. Oh, we have stories about Islamabad, dude. Okay. क्या बोलते हैं? So essentially, what happens with Osman's dad's colleague is कि he said कि basically it was like a father son, bring your son to work day type. होता है अक्सर, not अक्सर, but like if कभी कभार कुछ लोग like they bring their okay, सही
सही है यार, bully the burger kid, सही है. Of course. तो क्या बोलते हैं, you have your you visit your dad's office कभी कभार, and so उस बच्चे को he wasn't potty trained and he needed to उसको potty आ गई, and then the dad was like okay सही है तुम बाथरूम जाओ, मैं आता हूँ, सही है. So वो बाथरूम जाता है बच्चा, and then he's like पापा मैंने कर लिया, आ जाओ धोने, right? आवाज लगाता है जोर से, अम्मी टट्टी कर ली, right? And then the dad's like okay सही है मैं आ जाता हूँ, and turns out कि बच्चा थैली में पेप्सी निकाल रहा था. Call back to other podcast. Anyways, so the dad's like okay सही है, now I need to wash up, and this guy is completely clueless, a complete 9 to 5 worker है. He's like on his job the whole time. He has no idea what to do other than his job at this point. He's like and like I think into the पानी भी खत्म हो गया था, right? I think so, because Yeah. what he did is I don't know how someone comes to this conclusion. वो जाता है and apparently the office workers, his colleagues, found him तिनके वाली झाड़ू से बच्चे की ऐस साफ करते हुए. तिनके वाली झाड़ू से, क्या भाई, Just imagine how excruciatingly मैं painful तो it must भाई have been. मैं आज तक अपने Like- मुंह से तिनके निकाल रहा था. Like आप तिनके वाली झाड़ू से कैसे कर सकते हो भाई? मुंह से डालूंगा, वहां से निकालूंगा, उसको बेचारे का reverse से. IRL भाई, and like बेचारे I'm not understanding कि number one आपने ऑफिस प्रॉपर्टी डैमेज की है, सही है, सही है. नंबर टू आपने अपनी प्रॉपर्टी, And just imagine janitor आता है वापस वॉशरूम के अंदर, उसको झाड़ू लगानी है, and he just starts like just you know आप योर पूरे ऑफिस फर्श के ऊपर there's बच्चे सोचो कारपेट हो आपके ऑफिस में, क्या होगा हैं? क्या होगा? How are you going to make this better now? You can't do this. Yeah. Anyways, क्या बोलते हैं? Imagine dude, if your dad did that to you, आप उनको like almost like I think that must have been the greatest trauma for that kid. Like maybe the father might have been an absent father, but I think that shit must have hurt. yeah, as if like already, as if the carpet, Yeah. as if already like dads and sons didn't have like a tumultuous relationship Yep. in like desi families. अपने अपने बच्चे की ऐसा तिनके वाली झाड़ू से धो दिया, अब क्या करोगे आप? सही है. I think the tumultuous part is where like every dad is just. I think the dad was just really afraid of seeing his own son's butthole. You know. Yeah. You wanna go on this tangent for the podcast? I was gonna go towards how puberty starts to hit and the dad just runs away from like the topic. हाँ यार. I mean, like, how did you get the puberty talk? I never did. It was basically my friends and I just distributing information amongst us. हाँ, razor अब्बा का इस्तेमाल नहीं करना होता है. बोलता हूँ हाँ. Yeah. मैंने तो कर लिया. Just what? Okay. That's your father-son relationship. नहीं. Shout out my boy dad. Shout out my boy dad. I was thinking, क्या बोलते हैं? Yeah, like same thing with me. I never got like any talk or anything. यही है. You're just like expected to figure it out. Yeah, basically. यही तो है कराची का गेम भाई. You have to figure it out yourself. Experience based है ये. It's like MMORPG. खैर, what was I saying? हाँ, anyways, IBEX, right? I'm thinking कि like IBEX में like what must be the confessions? What do you think it will be like? I think it's like आज सिर्फ मुझे कॉल पे एक अंकल ने सिर्फ 5 दफा कुत्ते का बच्चा बोला, right? Like what do you say? What's the confession? आज मुस्तकीम ऐसी टाइट बेल्ट पहन कर आया था, उसकी तोंद यहाँ से बाहर निकल रही थी लेकिन वो इतना चिंका लग रहा था. Yeah, dude, like it's like आज मैंने 5 टिकटॉक बनाए and मुझे पता भी नहीं चला मेरे बॉस कहाँ से है. It's like आज मैं 3 महीने से देख रहा हूँ आयशा एक भी कॉल नहीं करती. वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पे बात कर रही है लेकिन बॉस को पता नहीं है. The boss is this like tired old guy, receding hairline. अनुपम खीर बैठा हुआ है बस. Yeah, from like wake up set. Oh अच्छा. I was singing like जिसमें वो बौना होता है. What? Which one is this?
Also, don't say bono. You're supposed to say कोडू little person. oh right, मैं तो तुम्हें कोडू बोलता हूँ लेकिन तो मैं बोना हूँ. अच्छा. I think it was you know that one with Akshay Kumar, Preity Zinta and Salman Khan. उसके गाने 100 दर्द हैं. Copyright हो जाएंगे. Copyright, sorry, man. Anyways, I'll search that movie up later. And also good job for knowing some Bollywood shit. Thank you. What the fuck do you That's mean? because मैं film student not No. you. So, yeah. Anyways, Anupam Kher, shout out. Boy, Shout out Anupam Kher. Hope you've never washed your son's ass with a thinking wale jhadu. I was also thinking like this reminds me of like जब आप बच्चे थे एंड ऑल दिस लाइक यू हैड सच अ लाइक ये वाली जो मेमोरीज होती हैं ये आपके पास सबसे ज्यादा वियर्ड होती हैं कि वो पापा ने दो दिया था टिक्के वाले झाड़ू से या तो लाइक अपने पापा के नहीं जा रहे थे नीचे घुस गए तो अब्बा ने लगा के झाड़ू से मारा था. या तो अब्बा ने नई शर्ट ली थी मैं उस पे उल्टी कर दी थी. राइट स्टफ लाइक दैट. नहीं, you know what actually I did? I remember this was my first memory. Like I think when my dad lifted me up, it was his new shirt and मुझे इतनी anxiety हो गई थी because like I don't remember. Right? So I ended up like puking on his shirt and then I messed it up. You know that reminds me जब हम पहले टूर पे गए थे and we were going नारान की तरफ. And नारान का रास्ता बेसिकली पहाड़ों वाला है. like गोल चढ़ के आप आगे जाते हैं. राइट. तो सिंस इट्स गोल तो हमारे दो दोस्तों को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम थी. दे फाउंड आउट तभी. खैर सो बेसिकली दिस वन फ्रेंड उसको कुत्तों वाली उल्टी आना शुरू हो जाती है लाइक बहुत ज़्यादा. ही वॉमिट्स फिर लाइक पहले एक बैग में करता है फिर एक बैग में करता है करते करते फिर वो जो है वो बोलता है लाइक मुझे बाहर निकलना है ना. तो आगे जो होता है वो एक और दोस्त बैठा हुआ होता है. ही हैड जस्ट गॉटन दीज न्यू पजामास. ठीक है. एंड जैसे ही दोस्त बाहर निकलता है आगे से दोस्त उसकी मदद करने के लिए बाहर निकलता है. he just projectile vomits onto his new pajamas and I to this day have the picture saved जिसके अंदर जैन पजामा उतार कर अपना पहाड़ के साइड में रखा हुआ है एंड उसके ऊपर बस एक you know first day on tour like you just see like a full like एक लाइन जा रही है you know like drip painting हुई है. I remember मेरे साथ होता था because like ताज साइड पे बैठा होता था मेरे राइट एंड ताज को भी मोशन सिकनेस थी. तो like how it used to go is कि like मैं यूं like I would be sleeping like this right. मैं like हाईएस्ट पे फुल पता नहीं मैं कंट्रैक्शनिस्ट क्या होता है contraption में लेटा था and then I would just get a tap on my shoulder and I would go like गाड़ी रोको. just like knee-jerk reaction and like fucking pukes. Anyways क्या बोलते हैं have you okay I'll explain. There's a very weird thing ke up until like I think it differs from school to school like in 6th to 7th class tak you do not want to talk to a single girl in your class, right? If you talk to girls your boys are like kya kar rahe ho. I think you're just an insult Shehzain. You guys were talking to girls in your class? Yes, sometimes. Like, never happened. Like basically, there was a time जब our school just went full fundamentalist and it went के लड़कियाँ और लड़के बिल्कुल अलग. तो लड़कियों को like they shifted ऊपर वाले फ्लोर पे and हमें जो था वो नीचे वाले फ्लोर पे. What? Like it became like a co-ed नहीं रहा था वो? Yeah, basically kind of co-ed but not really. I remember this one time जब basically you had a lot of restrictions स्कूल में like बाल नाखून वाखून आपका होमवर्क ये बुक वो बुक. एक तो ऐसा सीन था कि लाइक वन टीचर वेंट लाइक कि मुझे पता है तुम बच्चे अंडरवियर नहीं पहनते हो राइट. तो व्हाट शी भाई क्या कर रही है आंटी घर पे कुछ नहीं चल रहा है ये क्या है लाइक बिल्कुल फारिग वो बिल्कुल फारिग. ठीक है. सो शी वेंट लाइक कि अब से तुम लोग अंडरवियर पहन कर आओगे. ठीक है. सो व्हाट और मैं चेक करूंगी. ठीक है. यू लाइक सुपर फकिंग कंफ्यूज कि व्हाट द फक इज शी गोइंग टू डू. सो अगले दिन जो है वो सारे बच्चे अंडरवियर पहन कर आए हुए हैं एंड शी एक्चुअली स्टार्ट्स टू चेक. नाउ व्हाट शी डज इज के she takes her hand और बच्चे को मोड़कर उसके कूल्हे पे चौकाट मार रही थी
What the fuck? ठीक है नहीं not exactly I think she was using a scale right तो like पता कैसे चलेगा उनको she would कि slap चड्डी the बनाए buttocks and like through she would feel the motion of it all and like उसके through like अगर आवाज थोड़ी हल्की सी आ रही है like damned है तो she would know कि हाँ बच्चा नीचे और कपड़े पहना हुआ है. What the fuck is this? Yep. Okay. And thankfully उस टाइम पे कोविड था तो yeah. उस टाइम पे कोविड था so like नहीं sorry it wasn't कोविड नहीं था. Oh my god, Yeah. dude. What the fuck? Yeah. उसी टाइम पे there's another story कि मेरे like I used to love having long hair right. तो School is like a human rights violation यार यहाँ पे कराची में. I hope like it's not like this anymore but like I think genuinely मेरा this shit स्कूल थोड़ा happens. और ज्यादा स्पेशल था. Bhai, I know this one person tells me कि like there was a teacher who used to come into class and her way of keeping the class in check was she would bring a huge jar of garam masala and just put it on the desk. So yeah, and she used to say if anyone misbehaves, I'm gonna put this in your eye. Wow. So yeah, मैं बहुत सारे फ्राइज लेकर आता अपने साथ. guys, you have to be creative Karachi में रहने के लिए. You have to come up with these solutions. So yeah, एक फ्राइज आंसू पूछ खा रहे हो आप, आंसू पूछ रहे हो. सही है, नमकीन भी, नमक भी आ रहा है, गरम मसाला भी. खैर anyway, you said गरम मसाला not मसाला चाट मसाला. गरम मसाला और चाट मसाला में फर्क है. गरम मसाला is like a very different spice. Like चाट मसाला is like actual मसाला like मिर्चों वाला मसाला right. तो गरम मसाला क्या है? It just makes your mouth hot. Like नहीं, there's no way of spice. गरम मसाला is like जो कि बहुत ज़्यादा you know पीला ऑरेंज सा रंग देता है डिशेस को. But it's not actually that. It has its own taste obviously. I forgot what it's called. खैर. So okay, this one Mr. Spice Man. So this one time in the same class as the underwear wala scene. This is traumatizing. What the fuck, dude? तो मेरे बाल लंबे थे एंड दे सेड कि लाइक कटवा कर आओ. आई सेड सही है. अगले दिन आया, नहीं कटवाए हुए, उन्होंने बोला कटवा कर आओ. दूसरे दिन कटवा के नहीं आए. दे सेड अच्छा मेरे साथ एक और लड़का था, उसकी बेसिकली बीच की मांग थी. सही है. एंड टीचर ने बोला राधे मोहन रिप्रेजेंट सलमान खान. सही है. एंड टीचर सेड लाइक कि ये क्या है, ये कैसा हेयर स्टाइल है, तुम अपना हेयर स्टाइल बदल कर आओ. ये कौन से तुम 70s के 90s के एक्टर बने हुए हो राइट. एंड लाइक I have to this day no clue what the fuck she was on when she said that. लेकिन सही है. चलो उस बंदे ने जो है वो अपने बाल नहीं चेंज करे, मैंने भी जो है अपने बाल नहीं कटवाए. सो व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने हम दोनों की पोनी बनाई एंड पोनी बनाकर उन्होंने हमें ऊपर वाली क्लासरूम के अंदर लड़कियों के साथ बीच में बिठा दिया. एंड दे वर लाइक अच्छा अब कटवा कर आना. एंड पूरे वक्त बस लड़कियां पीछे मुड़ के देख रही हैं. Just those rotted shit, man. Just those rotted shit. The worst, right? Okay. So the thing was कि हमारी अच्छा. So I'm assuming तुम्हारी क्लास में अच्छे खासे बच्चे थे. Yeah. Like around 40. For around 40? Yeah. Just in the shit. boys वाली. Okay. What? Yep. Okay. खैर मेरी मुकम्मल क्लास में 13 बच्चे होंगे. सही है. I was in the worst schools you could ever imagine. So, I think I've told this story one time. I'll tell another one after this. But क्या बोलते हैं? What happened was कि इतनी छोटी सी क्लास थी and how it used to be divided was कि एक रो में सारे boys थे, एक रो में क्या बोलते हैं सारी लड़कियां थी. And this is just because socially ये बन जाते हैं. सारे boys अपने साथ बैठे होते हैं, सारी लड़कियां अपने साथ, right? तो क्या बोलते हैं this one teacher to ridicule me कि लाइक मैं होमवर्क नहीं करके आया. एंड दिस इज एट मेरा बचपन का रेबेलियस फेज. शी गोज लाइक तुम आके इस लड़की के साथ बैठे हो. एंड आई टॉक टू दैट गर्ल बिफोर एंड शी वाज लाइक नाइस. आई वाज लाइक फ्रेंड्स विद हर काइंड ऑफ, राइट? शाउट आउट आयशा. या सो व्हाट हैपेंड वाज कि आई वाज जस्ट सिटिंग विद हर एंड द रेस्ट ऑफ द क्लास वाज लाइक लुकिंग. एंड बिकॉज आई वाज नॉर्मल, आई वाज जस्ट लाइक ओके आई एम सिटिंग इन द गर्ल्स रो, राइट? I was acting normally. The teacher was like, why are you not feeling embarrassed, right? I'm like,
I don't know why. Maybe क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं, maybe क्योंकि mutant नहीं है ये लोग, right? As only they have like a third eye or like pus dripping out of them. I don't know what they expected कि लड़कियां आएंगी. तुम लड़की हो. मैम आप भी लड़की है. What's wrong with this? खैर क्या बोलते हैं, because of that like nothing really used to like, nothing was weird, right? And again to hammer the point home कि how like weird my school was. Okay, so I was in a real goddamn Gulshan school, सही है. And as much as I would like to, like as much as it is very true कि I am burger, I was not raised around a burger environment at all. सही है. I mean, I bet Shaheen wasn't it. See, you're talking about Shaheen. This is not Shaheen. Oh. This is before that. सही है. Fuck. There is a school called well, I don't know what it's called now. It's probably something different, but it was part of the Vision. सही है. Okay. The Vision school का. So it was that, and then it went into like basically the Vision cut off branches that weren't doing good, and I was in one of those branches. Ooh. And it became its own separate branch, its own separate school called the British Education System. Already sounds really bad. सही है. And wanna be British they सारे. And guess what? What? They used to speak in a British accent? वहाँ पे Cambridge नहीं था. Oi, moi! Oh, it's a peaky fucking blonde. So like it's so I don't know what they were going for. British education system and completely metric based है. That's fucking stupid. It's nothing. There's like no sense to this. Like हमारा schooling system Karachi में nothing works. I am genuinely like being so serious right now. In the middle I thought of like making a full like rally नहीं क्या बोलेंगे यार. I tried to make a full march talking about how it's just school is just यहाँ पे human rights violations. I don't know if it's still the same, but like dude, like genuinely I have this really fucking terrible story. 5th class थी I think, right? So I was still pretty fucking young. 5th class में how old is one person? Like 9, 10, right? Something along that line. I think 10. 10. Yeah. Around 10 I guess. So I was 10 years old. हमारी literature की class थी, right? तो literature के लिए we had to bring the reading book always. तो this one time like 3-4 हम बच्चे थे. 2 बच्चे थे बल्कि. हाँ, मैं था और एक लड़का था. I remember his name being Junaid, I think, yeah. Shout out Junaid. Shout out my boy Junaid. Khair. So Junaid and I, we didn't bring our books, right? And sorry, took our break. तीसरी. So Junaid and I didn't bring our books. The teacher, her name was khair. Let's leave the name out. She basically she was a bit psychotic. What she used to do was ke like not on this day. She वैसे भी on generally used to do this ke she would like put a pen between your fingers and then she would like squeeze. ठीक है, ये इनकी casual punishment थी, like squeezing your fingers by putting a pen between them. And she would do it with all of them. ठीक है. Hey, and she had a lot of pens. super fucking painful, right? And then this time that we didn't bring our books. I saw the same thing happen in like Call of Duty का campaign था, वो torture करके we was like what's the number इसमें से pen घुसाता है, squeezes the hand. It's like oh don't me. Legend torture. It's like some ancient Chinese torture method, but khair. Is it? No, it's not. Okay. I'm making that up. Khair, so this time she's like having a worse episode than usual, I guess. And what she does is she just tells us to stand up and she slaps us continuously. Like हमें मुंह के ऊपर उन्होंने मेरे ख्याल से 20-30 चमाट मारे होंगे. And to this day I can fucking feel them. ठीक है, इतनी जोर से वो लगे थे. And I was just fucking 10 years old and वो मुंह पे खींच के मारे जा रही हैं. And
गॉड आई स्टिल रिमेंबर कि किस तरीके से, मैं बाद में भी बहुत टीचर से पिटा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं लाइक आई यूज्ड टू बी एन एब्सोल्यूट फकिंग क्लाउन राइट, मैं बहुत पिटा हूँ, मगर आई स्टिल रिमेंबर दोस फकिंग स्लैप्स. एंड मैं और जुनेद लाइक हम लोग कुत्ते की तरह लाइक वी जस्ट cried throughout her class. And the next class, like I remember Miss Binesh हुआ करती थी, she used to be a really really nice teacher, and like she realized कि क्या हुआ है, and she like comforted us, and she hugged us, and she was like okay चुप हो जाओ. It was really nice of her. Okay, God, definitely human rights violation. Genuinely यार, like it's fucking like crazy. मेरे And साथ like ये तो this isn't even the worst of it, like what happens in crazy shit. Yeah. And like worse there's fucking shit that happens. one tweet which is like, how the fuck do you have like beef with a child? Right? He's just a fucking child, dude. Like उसका अभी इतना समझने का टाइम नहीं आया है. You're like 10 years old, you're like, you know what, मेरा आज का enemy है 10 साल का बच्चा. 10 साल का बच्चा था मैं तो I didn't even used to set my own timetable. like timetable होता था ना Monday Tuesday Wednesday, तो मैं खुद करता भी नहीं था, मेरी अम्मी करती थी भाई. Yeah, so like why are you like she just beat the fuck out of me, ठीक है, like the fuck, bro, if you like, damn, that's fucking crazy dark. But like holy shit yaar, this is a very real thing and I hate that it used to happen. Lekin it's happened. And then क्या बोलते हैं, what's funny is कि after like 6th 7th class there's a thing हमारे साथ होता है with पाकिस्तानी children, हमारा जो growth hormone है वो crazy हो जाता है. सही है, something happens. हमारी मेरी शेज़ैन का नहीं हुआ था, वो मेरा नहीं हुआ है. sorry, सही है, लेकिन this is why I learned genjutsu. सही है, this is why I became a genjutsu user. So मेरे सारे skill point वहाँ पे थे. However आई रिमेंबर हमारी उसमें 6th या 7th क्लास का एक लड़का था जो मेरी वैन में बैठता था बिल्कुल आगे की तरफ. सही है, जो एंड वो होता है कि स्कूल में जितना आपके हायर क्लास होती है आप उतना आगे बैठते हैं. सही है. सो बेसिकली वो एट द एंड ऑफ स्कूल ईयर एंड वो आगे बैठा था एंड उस साल आशिकी 2 निकली थी. ओह या ब्रो, दिस फकर, आई डोंट नो उसकी जिंदगी में क्या हुआ था, लेकिन only Ashki do songs in the van. So yeah, only Ashki do songs in the van. The whole like year, and I think the year before that as well. So yeah, 2 years this motherfucker was on Ashki do. So yeah, don't sing yaar, copyright strike. But khair, anyways, this guy, I swear to fuck, this guy was 7 to 8 feet tall or something. I'm like, dude, you're what, like 17? What? Nahin, this guy had to be like what, 15? 15, probably 15. Yeah. He's so tall. I'm like, क्या कर रहे थे भाई? No, it's insane. Some people like growths पर इतना crazy आ जाता है कि like 15 साल का होने से पहले उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी निकली हुई होती है कि तबलीगी जमात वाले लगे होते हैं. And that's when आपकी like हाँ, genjutsu आपका activate होता है. You start to kick in, right? You get the comma in your eye. खैर क्या बोलते हैं, I was saying कि after like 6th 7th class, I don't think वही तो ये होता है कि you know your parents go like अब तो बड़े हो गए, अब तो मारने की भी नहीं है, राइट? मार भी नहीं सकते, राइट? अब तो खुद समझ जाना चाहिए. सुधर जाओ बेटा. इट्स लाइक आई डोंट थिंक कि इस वजह से टीचर स्टॉप हिटिंग यू. इट्स बिकॉज मुझे आपके सारे अटैक पैटर्न पता है. सही है, आपको पता नहीं है भाई, डार्क सोल्स खेलता हूँ मैं. सही है, मिकीरी काउंटर मारता है. मिकीरी काउंटर मारता हूँ रोजाना. सही है, एक थप्पड़ मार के देखो. सही है, टांगों के नीचे से निकाल देता है भाई. I am so fucking good. सही है, I know all of your techniques. आप मुझे like वैसे have you thought about this कि like कितने ढीठ हो जाते हैं? I don't think कि अभी मैं इतना ढीठ हूँ जितने हमें स्कूल में ढीठ हुआ करता था. Probably. Like I would like यूनिवर्सिटी के अंदर I would still listen to क्या कहते हैं, if my teacher like अगर मेरा कोई भी टीचर जो है वो बोलेगा या लेक्चरर बोलेगा कि like stop doing this, don't do that, तो I'll stop it. लेकिन like ऐसे मेरी उर्दू की क्लास होती थी and like मेरी टीचर बोलती थी like start like writing down the shit that I've written on the board. तो मैं literally क्लास के गिर्द जो था वो नाचता रहता था अपनी कॉपी लेकर और मैं कुछ करता नहीं था. एंड मेरी टीचर तंग आके like she'd be like मैं क्लास छोड़ के जा रही हूँ. Oh shit, have you ever made a teacher cry? I'm not proud of it. Wait, I remember this one time. क्या बोलते हैं, हम लोग क्लास में थे, right? And we had this nice teacher who would like who was from a class above us. सही है, वो आके हमें पढ़ा रही थी just to like fill in for another teacher who was absent, right? And she's like teaching us, we're all like having fun and shit.
and then she looks down at her feet और उनके पैर पे एक काली चुपकली थी. सही है. Fuck. And you know these teachers, right? क्या बोलते हैं? She like kicks the chupkali off. She gets scared shitless. वो जाती है and she like sits outside of the class and she's like crying, right? And all of us are like, oh shit, like she's like crying. He was like, we've never seen like a teacher cry before, and so we're like, oh, like damn, this is crazy. And then उसके बाद the funniest shit happens. Okay, another teacher goes and runs to like the science lab, right? Like, what the fuck is going on, right? She's gonna make an invention or something. She goes back in time, stops the chupkali. नहीं तो क्या बोलते हैं? Turns out उसके बाद कुछ 2 मिनट गुजरते हैं, साइंस वाले सर आते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं रवि. Oh my god. Right? And then he's like कोई बात नहीं, it's fine, right? Turns out कि साइंस वाले सर का चक्कर चल रहा था मुझसे. Oh my god, भाई, crazy. But like, man, like, do you think school is like still a good memory for you? I don't think school is a good memory for you. I think so, magar that's more like a personal thing, right? Because I've always felt कि like my youth, I was a very different person back in my youth. So like I had a good time. I had a really good time. Like I was an absolute clown. लेकिन like being an absolute clown, like it had its perk. Yeah. You had a lot of fucking fun. Definitely. Okay, so I remember the best way my school used to like क्या बोलते हैं, make sure that students weren't cheating. Was that they would take all the classes और वो ना मिक्स कर देते थे. लाइक एक ही क्लास में सारे क्लास के सारे बच्चे मिला देते. एंड यूज्ड टू मेक वन बिग 7 फीट टॉल बच्चा बनता था. दो बच्चों का he was like a human chimera. I was saying like a Power Ranger का जो बड़ा था होता ना. But नहीं, that's fine. He just becomes a bigger kid wearing a trench coat. He becomes a guy who listens to Ash Kiddu. I was saying कि yeah, तो सारे क्लासेस है ना एक ही हो जाती थी, राइट? एंड देयर वुड बी वन क्लास, उसमें लेट्स से 6th 7th और 8th के बच्चे होते थे, राइट? तो लाइक यू वुड बी सिटिंग नेक्स्ट टू, लाइक आप 6th क्लास में हो, यू वुड बी सिटिंग नेक्स्ट टू एन 8th का. यूर लाइक क्या चीटिंग करोगे, राइट? एंड ऐसे करके मैं पेपर करके बैठ गया. एंड ऐसे बाकी 2-3 बच्चे अपने पेपर करके बैठे थे. एंड हमारे जो इन्विजिलेटर थे वो हमारे इंग्लिश के सर थे. सही है. एंड देन उसके बाद वी नोटिस के वन ऑफ द किड्स हैज अ न्यू हेयर स्टाइल ना. उन्हें बाल ऊपर करके आया. दिस इज द 2000s. यूर लाइक बाल ऊपर, कूल, राइट? एंड देन क्या बोलते हैं, वन किड गोज लाइक, यार give me a random name, like यार इश्तियाक, what the fuck. यार इश्तियाक, तुमने अपने बाल ऊपर करे, ये कैसा हेयर स्टाइल है, राइट? एंड देन ही गोज लाइक, इश्तियाक गोज लाइक, चुप हो जाओ, ये स्पाइस है, राइट? एंड देन द इंग्लिश टीचर गोज लाइक, ये क्या है? And then Ishtiyaq goes like, spices, sir. Garam masala. He pulls out the jar. Ishtiyaq pulls out fries. But like, he's like, ये spice है, चुप हो जाओ. And then all the kids who are giving their papers are like, what the fuck is happening here? Right? Speaking of like exam में जो बच्चे आपके साथ different grades के आगे बैठते थे, so there used to be these 2 kids, like they were brothers. तो एक जो था वो मैं उस टाइम में 6th क्लास में था, राइट? तो वो लड़का 7th क्लास में था. और उसका बड़ा भाई he was like in 8th or 9th. सही है. तो सीन ये था कि they were in the same column as mine. column. खैर, तो मेरे बराबर में जो था उसका छोटा भाई बैठता था. और उस मेरे दूसरी साइड पे, लेफ्ट साइड पर जो था, वो एक और लड़का था कोई सा, आई डोंट नो हु द फक ही वाज. उसके बराबर में उसका बड़ा भाई बैठता था. सही है. नाउ द फक्ड अप थिंग वाज कि सही है, मैं सुबह आया, एग्जाम देने के लिए बैठा. एंग्जाइटी वैसी होती थी मिड टर्म एग्जाम्स की, हाफ फाइनल्स की. आप आगे बैठे हो, आप एग्जाम देना शुरू करते हो, एंड वो बच्चे जैसे ही आपके बराबर में आके बैठते हैं, यू स्मेल
like the most musty, like सड़े हुए अमरूद की बदबू, right? Yeah, the kids, the kids who watch My Hero Academia. And they just always smell like that, and मुझे पूरा पेपर अपनी नाक बंद करके देना Fuck, पड़ता था. इतना क्या साड़ डाल दो? Yeah, it was like ammonia बैठा हुआ है. So yeah. Like the most horrendous shit. The worst guy. Bhai, this reminds me. Okay. Shit, this is a crazy one. Alright. I remember. Oh shit, I'm not gonna name drop this kid because this will ruin his life. If he's still if someone can trace him down. But khair. Give me another name. Imtiaz. Imtiaz. So yeah. Favorite grocery shop? Imtiaz. So yeah. So what happens is I'm sitting next to Imtiaz. Imtiaz is a class like before me. He's younger than me, right? My God. So we're sitting, right? Imtiaz goes to the washroom, comes back, right? And I'm sitting there, and I start to smell the worst smell, right? I'm like, what the fuck is happening? The Yasir kind of smell. Yeah, like the sudden kill smell, right? Oh no. But bad. worse, this is disgusting, right? And it's not stopping. Like it's not like source se khatam ho gaya. It's like source hai yahan pe. And I'm like, fuck. Source hai yahan pe? Fuck. And then I look down at Imtiaz's shoes, and it's like full of shit. Nahi. He curb stomped his shit, and he's walking through the school. And then I'm like, Imtiaz, तुम्हारे जूते पे टट्टी लगी हुई है, right? And Imtiaz is like, oh, and this is Imtiaz's reaction. Imagine your desk है. Nahi, motherfucker. Imtiaz takes his fucking shoe, wipes it on the desk. Fuck. And I'm like, what the fuck? I'm like, Imtiaz, right? And then the teacher's like, do you guys smell shit? Do you guys smell what's fucking happening, right? And then I'm like, ma'am, Imtiaz ने टट्टी पूछ दी अपनी on the fucking desk, right? Just to traumatize shit. It's the worst fucking thing. I'm like, what? Like, is this okay? This guy's a year younger than me, right? I'm like, are these 2002 kids just gone now in the head? What's happening with them? Khair, anyways, क्या बोलते हैं? I'm like, okay, so yeah, this has happened. And then I told this to my brother one time, and he said this one kid who used to study with him, he also got caught with like a shit footprint, but it wasn't he got caught by the teacher or by the students or something. The PT teacher apparently like walked into the bathroom, and he saw like a trail, of shit. Fuck. So yeah, and he walked, and he like came into the class, and he walked in, and it led to the kid's desk. Fuck. Because he had like stepped on shit. Master Hunter PT teacher. By Sherlock Holmes with magnifying glass, like, hey, you uncle are Specks of shit just all around this. He's like, tudung, right? He's fucking walking. You just hum Pink Panther. Yeah, okay, wasn't there a detective in that as well? Right. Yeah. So the guy, motherfucker, like tracks him down like an expert hunter and licks the shit. He's like, he checks the wind. He like tracks the kid down. But like, imagine that. क्या होगा? Like, I mean, the obvious thing is कि like, पहले used to have like, yeah, but like Scotties होती पहले तो your foot slips. Oh fuck yeah. Your foot slips, goes into the commode. You said it every fucking time. Yeah. थोड़ी देर बाद क्योंकि सुना जाता था, you had. Oh my god. Bhai, it was. I need to stop doing like yeah, no, keep doing it. I'll sell it on I'll sell your foot mix, man. Oh my god, my back. Well, do you have any other tutty stories you want to talk? Man, why is it that we go into the worst? Always goes into that. The worst directions for this podcast. The tutty podcast nahi karte. Khair. To stop doing tutty. I am Shehzain. Before I go into the outro,
So I have included in the animations there's going to be like a Spotify page for this, but obviously Spotify it doesn't allow Pakistani podcasts. Pakistan में podcast allowed नहीं होते. So until that gets क्या बोलते हैं cleared up. या तो a bunch of like fans from out of the country go like yo this is the exact message you have to type out. Yo, love the work you're doing, Shehzain. So yeah, I love the work you're doing, Ammar. I love Karachi and no other city in Pakistan. I am so out of place now. And I would love to hear your podcast on Spotify. And then uske baad, I don't know, many people can be typing this when I can't confirm your identity. So I need you to DM me a picture of your passport. So yeah, front and back of your credit card and your social security number. Then I'll go like, okay, so yeah, this is like someone who's like willing, right? CNICU photo भेज देना and also Corona की identification authentication. So yeah. But other than that, if there's a mass appeal, I will start Spotify. And speaking of Spotify, listen to me on Spotify. Yes. And follow this guy on Instagram. Please. Don't follow him. This is Ammar Saeed. Khair, this is Shehzain. This is Ammar signing off. I love you. Allah Hafiz. This has become like a thing now. Okay, sure. We kiss our fans now. Okay. Allah Hafiz.